Good morning, dear students. Today in this video we will do the logical reasoning. First question is complete the series. Students, each series follow a pattern. हर एक series एक pattern follow करती है. You have to think what is the pattern of each series and answer accordingly. Okay? First question is AB, BC, CD, DE and dash. First of all, you have to look at the letters given in that series very carefully. Then you have to think what pattern it follows. Okay? Students, see only the first letter of each word. हर एक word का first letter अगर आप देखोगे A, B, C, D. क्या आपने नोटिस किया that these letters are written here alphabetically. Now इस पैटर्न को फॉलो करके हम अपना आंसर फाइंड करेंगे. ओके? Alphabetically what comes after D? Here E will come. Okay? Now similarly see the second letter of each word. यहां पर भी अल्फाबेटिकल सीरीज फॉलो हो रही है. सी बी सी डी ई. अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज व्हाट विल कम आफ्टर ई? एफ विल कम. सो ई एफ इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके? नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. This question is same as question number 1. The only difference is in this question 3 letters are there and हमारे first question में 2 letters थे. Okay? Now let's find out the answer of this question. Look at the first letter of each word. A, B, C. What will come after C? D will come. Okay? Now see the second letter B, C, D. E will come here. Now the third letter C, D, E. What will come after E? F. So D, E, F is the answer of question number 2. Now come to the question number 3. Question is 1, 3, 5, 7 dash. जब आप इन नंबर्स को देखोगे यू विल नोटिस दैट 2 नंबर्स के बीच में एक नंबर छूटा हुआ है. लाइक 1 के जस्ट बाद 3 तो आता नहीं है. सो हियर यहाँ पे कौन सा नंबर छोड़ा हुआ है? 2. ऑलराइट? सो इन बिटवीन 3 and 5 कौन सा नंबर छोड़ा हुआ है? 4. सो दिस इज द पैटर्न ऑफ दिस सीरीज कि हर 2 नंबर्स के बीच में एक नंबर छोड़ा हुआ है. सो 1, 2 को छोड़ दिया है 3, 4 को छोड़ दिया है 5, 5 के बाद 6 को छोड़ दिया है 7, 7 के बाद 8 को छोड़ के व्हाट विल बी द आंसर? आंसर इज 9. 9 इज द आंसर ऑफ दिस सीरीज. ओके? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. 2, 4, 6, 8 dash. जब आप इन नंबर्स को देखोगे यू विल नोटिस दैट दिस इज द टेबल ऑफ 2. लाइक 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8 and what is 2 into 5? What is 2 5s? 10. So 10 is the answer of this question. Now next question is complete analogous pair. In this type of question you have to think what is the relation between the first 2 words and then the same relation you have to establish in the other 2 words. Okay? Question number 1 is reward good, punishment dash. Reward जो है वो अच्छे कामों के लिए दिया जाता है. And then what will be the answer of punishment? Your options are A, wonderful, B, funny, C, bad. What will be the answer?
Answer is bad. Reward good, punishment bad. Question number 2 is push, pull, throw, dash. Push का opposite क्या होता है? Pull. And throw का opposite क्या होता है? Your options are A. Game, B. Pick, C. Jump. What will be the opposite of throw? Answer is pick. B is the correct answer. Okay. Now come to the question number 3. Now, later, easy, dash. Opposite of now is later. What will be the opposite of easy? Your options are A. Simple, B. Fun, C. Difficult. Answer is C. Difficult, because the opposite of now is later and the opposite of easy is difficult. Now come to the question number 4. Brush, paint, pen, dash. ब्रश पेंट करने के काम आता है. पेन से आप क्या करते हो? योर ऑप्शंस आर ए. ईट, बी. राइट, सी. स्टील. आंसर इज बी. राइट. ब्रश, पेंट, पेन, राइट. Our next question is choose the correct mirror image of the given figure. In this question, you have to find out the mirror image of this figure. Okay. There is one easiest way to find the mirror image of any figure. Suppose this is my figure. Alright. If I want to find the mirror image of it, then simply there is a trick. आप क्या करते हो? आप अपनी जो फिगर है उसको इस तरह से टर्न करोगे तो उसकी मिरर इमेज फॉर्म हो जाती है. ओके. सो इस फिगर की मिरर इमेज क्या होगी? दिस वन. होप इट इज क्लियर नाउ. किसी भी पिक्चर को, किसी भी, इनफैक्ट इन लेटर्स ऑल्सो और इन फिगर्स ऑल्सो, अगर आप अपनी फिगर को या लेटर्स को इस तरह से टर्न करते हो, देन जो इमेज फॉर्म होगी दैट विल बी द मिरर इमेज. ओके. होप इट इज क्लियर नाउ. सो इन दिस क्वेश्चन दिस इज माई answer. Okay. This is the figure of my question number 2. Now in this question also you have to find what will be the mirror image of this figure. जैसे मैंने first question में किया था, same you have to do in this question also. अगर आप अपनी पिक्चर को इस तरह से टर्न कर दोगे, then जो इमेज फॉर्म होके आएगी that will be the mirror image of this figure. So what will be the answer of this question? This is the answer of this question. Okay. Now come to the question number 3. In this question you have to find out the mirror image of the letter C. Okay. आपको C letter की mirror image form करनी है. So what will be the answer? Same. जैसे आपने फिगर के साथ किया था, सेम यू हैव टू डू विद द लेटर्स ऑल्सो. ओके. सपोज दिस इज माई सी एंड अगर मैं अपने सी को इस तरह से टर्न करती हूं, दैट विल बी माई मिरर इमेज. ओके. सो व्हाट विल बी माई आंसर? दिस इज द आंसर. Hope it is clear to you how we will find the mirror image of any figure or any letter. Now I show you one more letter. This is letter E. If I tell you find out the mirror image of the letter E, how you will find it? Simply you have to turn your letter like this and this will be my mirror image of letter E. Hope mirror image concept is clear to you. That's all for today, dear students. Thank you and have a wonderful day.